Excellency Lifeng, and Prime Minister, Islamic Republic of Pakistan. May we request the kids to please stay back? Rania, may I request the children to be sent back? Prime Minister, Islamic Republic of Pakistan, Mr. Muhammad Shehbaz Sharif, and the Vice Premier of People's Republic of China, His Excellency Mr. Lifeng, meeting the kids who have just performed on the national anthems of Ladies and gentlemen, People's Republic of China and Islamic Republic of Pakistan. Absolutely, the friendship that is intergenerational, and indeed this is the young lot that represents the future for both China and Pakistan. And today indeed is a historic moment, the decade celebration of CPEC, the game changer, the major initiative that has given Pakistan the much needed boost. And here we have the Chinese senior leadership and the Pakistani senior leadership with the kids who performed. A big encouragement for all of them. Farooq, what a beautiful gesture to see the young ones who are really going to be leading the way forward in the days to come as CPEC and all the other brilliant projects take root and bring prosperity for the two countries. Thank you very much, Your Excellencies. Lifeng and Prime Minister, Islamic Republic of Pakistan, Mr. Muhammad Shehbaz Sharif, for coming up on the stage and encouraging the young kids. Excellencies, ladies and gentlemen, this is indeed a historic day. We'd like to formally begin this ceremony with a recitation from the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله خالقنا المولانا العلي العظيم. ویژن سے حقیقت تک تقریب جاری ہے، لیکن خبر دیں گے آپ کو مغل پورہ میں موٹر سائیکل سوار ملزمان کی کار پر فائرنگ سے کار میں سوار 2 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں. مزید کیا تفصیلات ہیں یہ جانتے ہیں احمد کھوکر سے. احمد، آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، یہ لاہور کا علاقہ مغل پورہ ہے جہاں پر مغربلا پل کے قریب سر عام موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ سے 2 افراد جو ہے وہ ہلاک ہو گئے ہیں. اور آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ 2 موٹر سائیکل سوار پہ آئے ہیں اور انہوں نے فائرنگ کی ہے، جس سے موقع پر گاڑی میں موجود 2 شخص جن کی شناخت جو ہے وہ ہو چکی ہے اور ان کو موقع پر فائر لگنے سے وہ قتل ہو گئے ہیں. اس کا IG پنجاب نے بھی جو ہے وہ نوٹس لے لی ہے اور شناخت ان کی. بہت شکریہ احمد کھوکر، آپ نے آگاہ کیا. اسلام آباد میں تشدد کا شکار گھریلو ملازمہ رضوانہ کی حالت نہ سنبھل سکی. لاہور کے جنرل اسپتال میں زیر علاج بچی کے معائنے کے لیے کارڈیالوجسٹ کو بلانا پڑا. ڈاکٹرز کا کہنا ہے بچی کی دھڑکنیں بے ترتیب اور بلڈ پریشر نارمل نہیں ہے. رضوانہ کو سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے. تفصیلات بتائیں گے نذیر بھٹی. جج کی بیوی کے تشدد کا شکار ہونے والی 14 سالہ معصوم بچی رضوانہ لاہور جنرل اسپتال میں جو ہے وہ زیر علاج ہے. ICU میں اس کا جو علاج ہو رہا ہے اور ڈاکٹروں کی ٹیم اس کی نگہداشت ہے وہ کر رہی ہے. آج جو مسئلے ان کے ساتھ درپیش ہوئے، بلڈ پریشر جو ہے ان کا کم زیادہ ہو رہا ہے، اس کے ساتھ ہارٹ بیٹ جو ہے وہ بھی اپنی نارمل پوزیشن پر جو ہے وہ نہیں ہے اور اس وجہ سے ان کی زیادہ کیئر جو ہے وہ کی جا رہی ہے. آکسیجن لیول خراب ہوا جس کے لیے برونکوسکوپی جو ہے وہ کی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ فزیوتھراپی بھی اس لڑکی کی جو ہے وہ کی گئی ہے، جبکہ کارڈیالوجسٹ اور سائیکاٹرسٹ جو ہے نا انہوں نے بھی ان کا معائنہ جو ہے وہ کیا ہے اور اس حوالے سے علاج ان کا جاری ہے. جی واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. سٹی ہاؤسنگ پاکستان کے مختلف شہروں کی پرائم لوکیشنز پر ڈیلیور کر رہا ہے ماسٹر پلانڈ گیٹڈ کمیونٹیز. سٹی ہاؤسنگ گجرانوالہ، جہلم، سیالکوٹ، فیصل آباد، ملتان اور کھاریاں میں تمام سہولیات کی موجودگی ہماری کامیابی کی ترجمان ہے اور آن ٹائم ڈیلیوری ہماری پہچان ہے. اور اب سٹی ہاؤسنگ لا رہا ہے پشاور میں محدود رہائشی اور کمرشل پلاٹس آسان اقساط پر جو پہلے آئیں پہلے پائیں کی بنیاد پر دیے جائیں گے. بکنگ کے لیے ابھی رابطہ کریں. سٹی ہاؤسنگ، دا گولڈ اسٹینڈرڈ لیونگ. پرماننٹ میگنیٹ موٹر سے 50% بجلی بچے گی. بدلے ہوا کے رنگ رائل فینس کے سنگ.
और अब सिटी हाउसिंग ला रहा है पेशावर में महदूद रिहायशी और कमर्शियल प्लॉट्स आसान अक़सात पर, जो पहले आए पहले पाएं की बुनियाद पर दिए जाएंगे। बुकिंग के लिए अभी राब्ता करें। सिटी हाउसिंग, द गोल्ड स्टैंडर्ड लिविंग। सना रेडी हो गई? फुप्पो और सब आते ही होंगे। रेडी अम्मी। वाह, बड़ा ग्लो है चेहरे पे। पर ये कोट के कपड़े? आज कोर्ट केस है ना अम्मी। इतने सालों बाद फुप्पो से ऐसे मिलोगी? तो उन्हें भी देखने दे, चेहरे और कामयाबी दोनों का ग्लो। ग्लो एंड लवली, इसके मल्टी वाइटामिन्स गहराई तक जाएं, दाग धब्बे घटाएं, दे अंदर से ग्लो। वाह, मलिक फैमिली की पहली लॉयर। चेहरे और कामयाबी दोनों का ग्लो। और अब सिटी हाउसिंग ला रहा है पेशावर में महदूद रिहायशी और कमर्शियल प्लॉट्स आसान अक़सात पर, जो पहले आए पहले पाएं की बुनियाद पर दिए जाएंगे। बुकिंग के लिए अभी राब्ता करें। सिटी हाउसिंग, द गोल्ड स्टैंडर्ड लिविंग। Knorr presents Tikku, the smoky and spicy one. Knorr लाया स्पाइसी टिक्का, जो है स्पाइसी और स्मोकी फ्लेवर्स का परफेक्ट कॉम्बो। और मेरा भी। हुकूमत सिंध ने सूबे भर में अवाम को सेहत की तमाम सहूलियात फराहम करने का अज़्म कर लिया है। इसी मकसद के तहत LUH हैदराबाद में पीडियाट्रिक ICU और कार्डियोथोरेसिक सर्जरी डिपार्टमेंट कायम किया गया है। जिला शहीद बेनजीराबाद में बेनजीर इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांटेशन अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है। 7 में सैयद अब्दुल्ला शाह इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में ICU और 4 जदीद ऑपरेशन थिएटर्स कायम किए गए हैं। लाड़काना में हादसात के शदीद जख्मियों के फौरी इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर कायम किया गया है। SIUT सक्खर में एडवांस रोबोटिक सर्जरी सिस्टम काम कर रहा है। मेरा नाम सना है। सक्खर SIUT हॉस्पिटल में मेरा रोबोटिक ऑपरेशन हुआ है। सिंध गवर्नमेंट की तरफ से रोबोटिक ऑपरेशन SIUT हॉस्पिटल के लिए और बाहर की आवाम के लिए एक बेहतरीन तोहफा है। थैंक यू सो मच सिंध गवर्नमेंट। खिदमत में सबसे आगे सिंध। कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में विजन से हकीकत तक की तकरीब जारी है और एहसन इकबाल खिताब कर रहे हैं। Single dollar in Pakistan. Mr. Vice Premier, the people of Pakistan will never forget the great gesture of our brotherly country that it came forward to help Pakistan when Pakistan was in the most need. The vision of this government under the leadership of our Prime Minister, Mr. Shehbaz Sharif, it has played a pivotal role in advancing and reviving the progress of CPEC. We believe in the transformative potential of this project, which is not limited to infrastructural development alone. CPEC is a catalyst for economic growth, regional connectivity, and prosperity for both our nations and the entire region. Today, as we look back at the achievements of CPEC, we take immense pride in the 1+4 portfolio of accomplishments. CPEC has significantly contributed to resolving Pakistan's energy crisis, the successful completion of energy projects with capacity of 8,000 megawatts, which has brought much needed relief to our people and industries, paving the way for sustained economic growth. The infrastructure development projects, including motorways, highways, airport, and the Gwadar port, have opened up new avenues of trade and connectivity, boosting economic activity and facilitating the movement of goods and services. Joint ventures and industrial cooperation between our two countries have flourished, leading to the establishment. वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। और अब सिटी हाउसिंग ला रहा है पेशावर में महदूद रिहायशी और कमर्शियल प्लॉट्स आसान अक़सात पर, जो पहले आए पहले पाएं की बुनियाद पर दिए जाएंगे। बुकिंग के लिए अभी राब्ता करें। सिटी हाउसिंग, द गोल्ड स्टैंडर्ड लिविंग। Have a bowl and then have some more.
शुभ लाया अब बैकअप फोन जो दे 30 रुपए की बचत। रॉयल स्मार्ट लाइफस्टाइल, ACDC इन्वर्टर फैंस, परमानेंट मैग्नेट मोटर से 50% बिजली बचेगी। और अब सिटी हाउसिंग ला रहा है पेशावर में महदूद रिहायशी और कमर्शियल प्लॉट्स आसान अक़सात पर, जो पहले आए पहले पाएं की बुनियाद पर दिए जाएंगे। बुकिंग के लिए अभी राब्ता करें। सिटी हाउसिंग, द गोल्ड स्टैंडर्ड लिविंग। न्यू डालडा स्टैंड अप पाउच, इजी टू पो, इजी टू कुक। हम और आप माँ की बराबरी तो नहीं कर सकते, पर उसके एफर्ट्स को स्टैंडिंग ओवेशन तो दे ही सकते हैं। न्यू डालडा स्टैंड अप पाउच, अ स्टैंडिंग ओवेशन टू मदर्स। नेचुरल इंग्रेडिएंट्स और ऑयल्स की गुडनेस मिले वाटिका शैम्पूज में। ऑयल और शैम्पू का विनिंग फॉर्मूला। मैं अपने पेशेंट्स को रेकमेंड करती हूँ नया सेंसोडाइन कंप्लीट प्रोटेक्शन प्लस। ये सिर्फ सेंसिटिव दांतों की हिफाजत ही नहीं करता, इसमें कई और बेनिफिट्स हैं, जैसे कि व्हाइटनिंग, कैविटी प्रोटेक्शन और सुपीरियर क्लीनिंग एक्शन। तो एक से ज्यादा टूथपेस्ट इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है। देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज। ये क्या हो रहा है? New Cheetos tubes and poppers. Try now. सिटी हाउसिंग पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों की प्राइम लोकेशंस पर डिलीवर कर रहा है मास्टर प्लान्ड गेटेड कम्युनिटीज। सिटी हाउसिंग गुजरांवाला, जेलम, सियालकोट, फैसलाबाद, मुल्तान और खारिया में तमाम सहूलियात की मौजूदगी हमारी कामयाबी की तर्जुमान है और ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। और अब सिटी हाउसिंग ला रहा है पेशावर में महदूद रिहायशी और कमर्शियल प्लॉट्स आसान अक़सात पर, जो पहले आए पहले पाएं की बुनियाद पर दिए जाएंगे। बुकिंग के लिए अभी राब्ता करें। सिटी हाउसिंग, द गोल्ड स्टैंडर्ड लिविंग। नेचुरल इंग्रेडिएंट्स और ऑयल्स की गुडनेस मिले वाटिका शैम्पूज में। ऑयल और शैम्पू का विनिंग फॉर्मूला। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों की प्राइम लोकेशंस पर सिटी हाउसिंग डिलीवर कर रहा है मास्टर प्लान गेटेड कम्युनिटीज, जहां है आपकी फैमिली के लिए एक कंप्लीट लग्जरी लाइफस्टाइल और एंटरटेनमेंट के लिए वाइड स्क्रीन 3D मॉडर्न सिनेमाज, जिनमें एक वक्त में 300 से ज्यादा अफराद की गुंजाइश। हेल्दी और एक्टिव लाइफस्टाइल के फरोग के लिए लेटेस्ट इक्विपमेंट से मुज़य्यन जिम्नेजियम और स्पा। सिटी शॉपिंग मॉल, फ्रेंड्स और फैमिली के लिए खुश जायका कुजीन से लुत्फ अंदोज होने के लिए रेस्टोरेंट्स, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, 24/7 पावर बैकअप, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन, CCTV कैमरास के साथ मॉडर्न सिक्योरिटी का निजाम। सिटी हाउसिंग, द गोल्ड स्टैंडर्ड लिविंग। नए पैराडोंटेक्स कंप्लीट प्रोटेक्शन में है 8 स्पेशली डिजाइंड बेनिफिट्स हेल्थी गम्स और मजबूत दांतों के लिए। टेक कंट्रोल और ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम को पीछे छोड़ जाएं। पहली बार विटामिन C और ग्लिसरीन के साथ नया लक्स, जो जिल्द को निखारे, नमी दे और दे चांद सा रोशन चेहरा। लक्स फेस ऑफ द ईयर माया अली। थैंक यू लक्स, पर ये अवार्ड सिर्फ मेरा नहीं, ये है इन सभी खूबसूरत चेहरों का जिनकी रोशनी से दुनिया रोशन है। नया लक्स, दे चांद सा रोशन चेहरा। और अब सिटी हाउसिंग ला रहा है पेशावर में महदूद रिहायशी और कमर्शियल प्लॉट्स आसान अक़सात पर, जो पहले आए पहले पाएं की बुनियाद पर दिए जाएंगे। बुकिंग के लिए अभी राब्ता करें। सिटी हाउसिंग, द गोल्ड स्टैंडर्ड लिविंग। ये कौन संभालेगा? अब रॉयल स्मार्ट लाइफ टाइम गारंटी फोन पे। रॉयल, साथ जिंदगी भर का। Have a bowl and then have some more. शुभ लाया अब बैकअप फोन जो दे 30 रुपए की बचत। और अब सिटी हाउसिंग ला रहा है पेशावर में महदूद रिहायशी और कमर्शियल प्लॉट्स आसान अक़सात पर, जो पहले आए पहले पाएं की बुनियाद पर दिए जाएंगे। बुकिंग के लिए अभी राब्ता करें। सिटी हाउसिंग, द गोल्ड स्टैंडर्ड लिविंग। कनौर प्रेजेंट्स पिक्कू।
the smoky and spicy one. Knorr Spicy Tikka, जो है स्पाइसी और स्मोकी फ्लेवर्स का परफेक्ट कॉम्बो। और मेरा भी। वेलकम बैक। कराची में नस्ला टावर की जमीन की गैर कानूनी अलॉटमेंट का मुकदमा अदालत ने मुलजिम मंजूर कादिर काका की उबूरी जमानत मनसूख कर दी। एंटी करप्शन ने मंजूर काका को गिरफ्तार कर लिया। साबिक डायरेक्टर जनरल SBCA मंजूर कादिर काका स्पेशल जज सुबह एंटी करप्शन की अदालत में पेश हुए। अदालत ने जमानत की दरखास्त पर महफूज फैसला सुनाते हुए मुलजिम की उबूरी जमानत मनसूख कर दी। रिमार्क्स दिए, मंजूर कादिर काका ने नस्ला टावर का नक्शा गैर कानूनी तौर पर पास किया। मंजूर कादिर काका और दीगर मुल्जिमान पर नस्ला टावर की जमीन 700 गज से बढ़ाकर 1100 मुरब्बा गज करने का इल्जाम है। इससे कबल अदालत ने मंजूर कादिर काका की 5 लाख रुपए के मचलके के एवज उबूरी जमानत मंजूर की थी। नस्ला टावर को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर 2022 में मिसमार किया गया था। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज। जमी हुई है ये चिकनाई, ग्रीसी है देखो कढ़ाई, हांडी और पतीली मांगे, खूब घिसाई खूब घिसाई। अब सफाई होगी आसानी से, बिना रगड़े बिना झंझट। मैक्स लिक्विड 3 गुना ज्यादा सफाई। और अब सिटी हाउसिंग ला रहा है पेशावर में महदूद रिहायशी और कमर्शियल प्लॉट्स आसान अक़सात पर, जो पहले आए पहले पाएं की बुनियाद पर दिए जाएंगे। बुकिंग के लिए अभी राब्ता करें। सिटी हाउसिंग, द गोल्ड स्टैंडर्ड लिविंग। सिटी हाउसिंग पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों की प्राइम लोकेशंस पर डिलीवर कर रहा है मास्टर प्लान्ड गेटेड कम्युनिटीज। सिटी हाउसिंग गुजरांवाला, जेलम, सियालकोट, फैसलाबाद, मुल्तान और खारिया में तमाम सहूलियात की मौजूदगी हमारी कामयाबी की तर्जुमान है और ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। और अब सिटी हाउसिंग ला रहा है पेशावर में महदूद रिहायशी और कमर्शियल प्लॉट्स आसान अक़सात पर, जो पहले आए पहले पाएं की बुनियाद पर दिए जाएंगे। बुकिंग के लिए अभी राब्ता करें। सिटी हाउसिंग, द गोल्ड स्टैंडर्ड लिविंग। So juicy. So yummy. Just so tender. Introducing the all-new Sabroso Crispy Chicken Strips. Tastes so good that nothing else matters. Sabroso Crispy Chicken Strips. So crispy, so tender. रूफ मास्टर, जो छतों की हीट और वाटर प्रूफिंग के लिए एक बेहतरीन इलास्टोमेरिक रूफ कोटिंग है। रूफ मास्टर लगाओ, गर्मी भूल जाओ। बात एतमाद की साथ है बरसों का, वो दाग मिटाए जो कोई न कर पाए। सूफी स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैयां। इन्वर्टर फैंस तो बहुत हैं, लेकिन सुपर एफिशिएंट टेक्नोलॉजी वाला इन्वर्टर फैन है सिर्फ पाक फैन, जो 30 वॉट पर देता है तेज हवा के साथ साथ बिजली की जबरदस्त बचत। पाक फैन, इट्स मोर देन अ फैन। वो एनिवर्सरी पे तुमने जो डायमंड रिंग दी थी, वो मुझसे कहीं गिर गई। अच्छा सुनो, कल अम्मी अब्बू आ रहे हैं, घर जरा जल्दी आ जाना। ये बहुत महंगा भी पड़ सकता था, पर दागों के डर से निकला चलेगा, क्योंकि मेरे पास है प्रियो।
جس کے 7 انزائمز کی طاقت کے سامنے ہر گہرا داغ مانے ہار. اسی لیے تو میں کہتی ہوں لائف کے ہر او کے لیے پریو. آپ کے گھر اور رشتوں کا چمکتا رنگ. ڈائمنڈ پینٹس، پاکستان نمبر 1 پینٹ. سٹی ہاؤسنگ پاکستان کے مختلف شہروں کی پرائم لوکیشنز پر ڈیلیور کر رہا ہے ماسٹر پلانڈ گیٹڈ کمیونٹیز. سٹی ہاؤسنگ گجرانوالہ، جیلم، سیالکوٹ، فیصل آباد، ملتان اور کھاریاں میں تمام سہولیات کی موجودگی ہماری کامیابی کی ترجمان ہے اور آن ٹائم ڈیلیوری ہماری پہچان ہے. اور اب سٹی ہاؤسنگ لا رہا ہے پشاور میں محدود رہائشی اور کمرشل پلاٹس آسان اقساط پر جو پہلے آئیں پہلے پائیں کی بنیاد پر دیے جائیں گے. بکنگ کے لیے ابھی رابطہ کریں. سٹی ہاؤسنگ، دا گولڈ اسٹینڈرڈ لیونگ. کیسے جاپانیز پینٹ کی جگہ کوئی بھی لگ جائے؟ اجی یہ دیکھو، آج یہ آدمی ہمارے گھر میں کوئی بھی پینٹ لگا رہا. نیپون کے معاملے میں لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں، دھیان رکھا کریں. نیپون پینٹ، ایشیاز نمبر 1 پینٹ برانڈ. This hourly clock is brought to you by اب کیش کی فکر نہیں کیونکہ جاز کیش ہے نا. These headline news are brought to you by 30 روپے میں بچت فل. سی پیک کے 10 سال مکمل. کنونشن سینٹر اسلام آباد میں خصوصی تقریب. وزیر اعظم شہباز شریف اور چین کے نائب وزیر اعظم ہی لفنگ کی شرکت. وفاقی وزیر احسن اقبال کا تقریب سے خطاب. کہا سی پیک سے خطے میں نئے ترقیاتی دور کا آغاز ہوا. چین نے پاکستان میں سی پیک کے تحت اربوں روپے کی سرمایہ کاری کی. چین نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا. باجوڑ خار خودکش حملے کے مزید 4 زخمی دم توڑ گئے. جاں بحق افراد کی تعداد 46 ہو گئی. 36 افراد کی میتیں شناخت کے بعد ورثہ کے حوالے. 8 لاشیں ناقابل شناخت ہونے کے باعث اسپتال میں موجود. 90 سے زائد زخمی مختلف اسپتالوں میں زیر علاج. سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی کی تعزیت کے لیے مولانا فضل الرحمان کی رہائش کا آمد. شہیدوں اور زخمیوں کے لیے دعا کی. اور گیس پہلے ہی نایاب. ایل پی جی میں مہنگی. چند روز کی مہمان حکومت کا جاتے جاتے عوام پر ایک اور بار. ایل پی جی کی قیمت میں 24 روپے فی کلو کا اضافہ کر دیا. ایل پی جی 201 روپے 15 پیسے فی کلو ملے گی. اوگرا نے گھریلو سلنڈر کی قیمت 282 روپے بڑھا دی. پروگرام دیکھیے دی رپورٹر. دیکھتے رہیے ARY نیوز. مستی مسالہ یمی فل آئرن پلس ہے مزہ فل. ہر بائٹ میں انرجی فل. کھیلو پڑھو بڑھو فل. آئرن پلس ہے مزہ فل. نور لایا نیو آئرن پلس نوڈلز جس میں ہے آئرن اور فائبر جو بچوں کو رکھے ایکٹیو اور تیز. 30 روپے میں بچت فل. مرچوں سے مسوڑوں میں جلن ہے کوئی حل؟ لو نیم یوکلپٹس اور پودینے والا کولگیٹ ہربل منہ میں ٹھنڈک پہنچائے. دانت مسوڑے صحت مند بنائے نیچرلی. کرو ہر صبح ہر شام ہر گھونٹ وائٹل کے نام. وائٹل پیو زندگی جیو. السلام علیکم ناظرین. پروگرام دی رپورٹرز میں خابر گمان چودھری غلام حسین صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. گزشتہ روز اتوار والے دن آپ نے دیکھا کہ خیبر پختونخوا کے ضلع باجوڑ کے اندر ایک انتہائی افسوسناک واقعہ رونما ہوا. JUIF کی طرف سے ایک ورکر کنونشن ہو رہا تھا ایک تحصیل کی سطح کے اوپر.
اور وہاں پہ ابھی تک کی جو اطلاعات آئی ہیں ایک انتہائی افسوسناک واقعے کی وجہ سے، وہ یہ ہے کہ 46 کے قریب ہلاکتیں ہو چکی ہوئی ہیں، 150 کے قریب لوگ زخمی ہیں، اور اکراس دا بورڈ شدید ترین الفاظ میں اس واقعے کو کنڈیم کیا جا رہا ہے۔ حکومتی پارٹیز ہوں یا اپوزیشن پاکستان تحریک انصاف ہو، تمام پاکستانی اس واقعے کو لے کے بہت زیادہ پریشان ہیں۔ پریشانی اس وجہ سے بھی ناظرین بنتی ہے کہ ظاہر ہے جو پاکستان آئندہ آنے والے 2-4 ہفتوں مہینوں کے اندر انتخابات کی طرف جا رہا ہے، اور ایک الیکشن کی جو ایکٹیویٹی ہونی ہے، ماحول بننا ہے، جلسے جلوس ہونے ہیں، اور ابھی یہ ایک چھوٹا سا جلسہ ہوا ہے، اس کے اوپر ہی اگر اس طرح کا حملہ ہو گیا ہے، اور اب آنے والے دنوں کے اندر ظاہر ہے بہت زیادہ پریشانی بڑھ جائے گی۔ تمام اکراس جو ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں اکراس دا بورڈ، ان کے لیڈران جلسے جلوس کریں گے، اور ایک خدشہ لگا رہے گا، ایک دڑکا لگا رہے گا دل کو کہ خدا نخواستہ کسی بھی جلسے کے اندر اس طرح کا اگر حملہ ہوتا ہے تو اس کا کیا انجام ہوگا، اس کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ یہ آپ کے سامنے آپ نے جو ہے دل دہلانے والے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ جو کچھ ہوا، ظاہر ہے ایک لوکل لیول کے اوپر ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی تھی، اور اس پولیٹیکل ایکٹیویٹی کو ظاہر ہے ملک کے اندر ظاہر ہے سیاست کا بھی ماحول آگے بننا ہے۔ تو چوہدری صاحب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر اس واقعے کو ہم سامنے رکھیں اور آنے والا جو ماحول ہے، آنے والے جو ہفتوں مہینوں کے اندر ملک کے اندر انتخابات ہونے ہیں، اکتوبر نومبر کے اندر جو بھی آئین کے مطابق معاملہ طے ہوگا 60 دن یا 90 دن، تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ خدا نخواستہ ملک کے اندر کیا ہماری سیاسی جماعتوں کے لیے اس طرح کا ماحول بنانا، الیکشنئرنگ کرنا مشکل ہو جائے گا؟ نہیں، اس میں دو حصے ہیں۔ ایک تو پچھلے سال 6 مہینے میں دہشت گردی جو ہے اس نے کئی شکلیں اختیار کی، یعنی کوئی ہفتہ، کوئی دن، کوئی مہینہ خالی نہیں جا رہا۔ بلوچستان میں پے در پے واقعات، کے پی میں پے در پے واقعات، اور اس کے علاوہ ایک تو یعنی پرتشدد واقعات اور دہشت گردی تخریب کاری نے زور پکڑا ہے۔ دوسرا، ہمارے جو یہ 8 دن رہ گئے ان کے جمعہ 8 دن، وہ ان کے جو لچھن ہے معاف کرنا، وہ ان کی بڑھکیں، ان کے بوسفل کلیمز، انہوں نے ملک کو بچایا، انہوں نے وہ جو تھا ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا، انہوں نے ادھر $300 ارب وہاں سے جمع کر لیے، $600 ارب ادھر سے کر لیے۔ یعنی لگتا یہ ہے کہ یہاں دودھ اور شہد تو بہت پیچھے رہ گئے ہیں، ڈالروں کی برسات جو ہے، اور پاکستان کو دنیا کا امریکہ، چین اور انڈیا کے سے بھی اوپر چلی گئی ہے اکانومی اور ملک پچھلے 16 میں، جبکہ باہر لوگ جو ہے ان کی حالت دیکھی نہیں جاتی۔ تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کیوں حقائق سے ہٹ کے وہ ثابت یہ کر رہے ہیں؟ خاور گورنمنٹ صاحب اور غلام حسین دیکھ لو، ہم نے پورا ملک جو ہے اس کے اندر ایسے لوگوں کے محلات کھڑے ہو گئے ہیں، لوگوں کی کوئی اتنا پیسہ جمع ہو گیا ہماری وجہ سے، اگر ہم نہ ہوتے تو ملک تباہ ہو جاتا۔ ہم نے ہر ٹھیک کر دیا، ہمیں ووٹ دے دو، نہیں تو تہاڈا کھ نہیں جے بچنا، جیسے وٹ دے آر ٹرائنگ ٹو سے۔ اور الیکشن کرانے کی ان کی کوئی نیت نہیں ہے، کیونکہ عوام ان کی ووٹ تو ڈالنا بڑی دور کی بات ہے، ان سے سلام دعا کرنے کو تیار۔ جی صاحب، اس سٹوری کی طرف بھی آتے ہیں کہ ملک کے اندر کیا انتخابات وقت پہ ہوں گے یا نہیں، لیکن ناظرین آپ نے ماضی کے اندر دیکھا کہ ظاہر ہے 18 جنوری سے پہلے جب خیبر پختونخوا کی اسمبلی کو تحلیل کر دیا گیا تھا، وہاں بھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی، تو کوئی بھی دہشت گردی کا واقعہ ہوتا، کسی جگہ کے اوپر امن و امان کی جو صورتحال پیدا ہو جاتی، کوئی دہشت گردی کا واقعہ پیدا ہو جاتا، تو ظاہر ہے پی ڈی ایم کی تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں، اس وقت اپوزیشن کی جماعتیں تھیں، تو وہ تنقید کرتی تھی تحریک انصاف کے پیچھے ایگزیکٹلی تحریک انصاف کی جو حکومت ہے اس کی تنقید کرتی تھی، اور حکومت کی ہی تنقید بنتی ہے۔ ناظرین، کسی بھی جگہ کے اوپر آپ نے سیکیورٹی پرووائڈ کرنی ہے تو وہ وہاں پہ جو موجودہ حکومت ہوگی، ظاہر ہے تمام جو وسائل ہیں، تمام ادارے ہیں، وہاں پہ پولیس ہے، ایف سی ہے، جتنی بھی سول لا انفورسمنٹ ایجنسیز موجود ہیں، تو ان کی ڈپلائمنٹ ظاہر ہے وہ جو سول انتظامیہ ہے وہاں پہ حکومت ہے، یہ اس کا دائرہ اختیار کے اندر آتا ہے۔ تو تنقید جو اس وقت موجودہ حکومت وہاں پہ ہے،
नाजरीन, आइन के मुताबिक तो इनके पास 90 दिन थे, लेकिन 18 जनवरी को लेके आज की तारीख तक ये 6 महीने से ज्यादा का वक्त इनके पास इन्होंने वहां पे गुजारे हैं। जाहिर है आप 3 महीने कुजा, अब तो ये अपने आप को चौधरी साहब फुल फ्लैज हुकूमत ही समझते हैं, क्योंकि निगरान हुकूमत से के दायरा इख्तियार से तो ये निकल आए हैं। निगरान हुकूमत का मामला था डे टू डे अफेयर्स को मैनेज करना। अब चूंकि ये पक्के वहां पे बैठे हुए हैं और पता नहीं ये कब तक बैठे रहेंगे, तो जिम्मेदारी इनकी बनती है। तो सवाल हमारा इसलिए उठाना बनता है मीडिया के अंदर बैठ के, जनाब आला, जब आपको पता है कि आपके वहां पे तवातर के साथ आपको इंडिकेशंस आ रही हैं, आपको वार्निंग्स आ रही हैं, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो बार बार इस इशू को हाईलाइट कर रही हैं, फ्लैग कर रही हैं कि जनाब आला अक्रॉस द बॉर्डर जो है जो हमलों की इस वक्त शुनीद है, दहशतगर्दी के वाकयात के हवाले से अक्रॉस द बोर्ड जो हमारी दुश्मन इंटेलिजेंस एजेंसीज बैठी हुई हैं अफगानिस्तान के अंदर, वो तमाम इस तरह के प्लान्स बना रही हैं। तो हमें जो है अलर्ट रहना है। अब ये वहां पे एक इंतखाबी अमल के हवाले से एक पॉलिटिकल एक्टिविटी वहां पे हो रही थी, वर्कर्स कन्वेंशन हो रहा था JUIF का, तो उसकी सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, वहां पे चारों अतराफ में नजर रखना, ये किसका काम था? जाहिर है वहां पे जो मौजूदा हुकूमत है, जो वहां पे जिली इंतजामिया है, उसका काम है। लेकिन नाजरीन, बड़ी अचंभे की बात यह है कि आपने देखा होगा कि वैसे तो आइन के मुताबिक एक जो निगरान हुकूमत है, केयर टेकर हुकूमत है, उसने आके इलेक्शन करवाने होते हैं, क्योंकि यहाँ पे गैर मामूली वाकयात पैदा हो गए हुए हैं KP और पंजाब के अंदर। पिछले दिनों हमारे वसीम बदामी के प्रोग्राम में इस वक्त जो PDM की बातें हैं, चूंकि वहां पे अलायंस के अंदर हैं, निगरान हुकूमत के हवाले से इनके जो दावे सामने आए कि कौन कौन कहां कहां बैठा हुआ है, किस पार्टी को कितना हिस्सा है, किस पार्टी के पास कितना हिस्सा है, और उसके बाद वहां पे जो इंतजाम इंसराम है इस वक्त हुकूमत का पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर, वो क्या एक बंदरबांट हुई है। वो निगरान वाला कॉन्सेप्ट, वो जो आइन कहता है, कानून कहता है, वो तो मेरे ख्याल में कहीं दूर रह गया। आप ये सुने और उसके बाद फिर हम बात करेंगे। जनाब आला, अगर आप जो हिस्सा बकदर जुस्सा वहां पे बैठे हुए हैं, तो ये जो सारे काम है ये किसने करने हैं? देखें जरा। लड़ाई ये भी है कि मुझे अपने कोटे के हिसाब से मुझे वजीर क्यों नहीं दिए। ये निगरान सेटअप है, लेकिन ये उस समय सेटअप नहीं है, ये तो कॉम्प्रोमाइज सेटअप बने हैं ना। उसमें मुस्लिम लीग नून के 2 लोग हैं।尊敬的夏巴兹总理、女士们、先生们、朋友们，我很荣幸作为习近平主席特别代表，同各位相聚在美丽的伊斯兰堡，共同庆祝中巴经济走廊启动10周年。习近平主席高度重视发展中巴关系，高度重视中巴经济走廊建设。在刚才宣读的贺信中，习近平主席充分肯定了中巴经济走廊建设取得的积极成果和重大意义，对走廊建设和中巴合作给予了深切关怀，提出了殷切希望，为下一步走廊的发展和中巴务实合作做出了战略指引。中方愿意同巴方一道，按照习近平主席贺信指明的方向，以更大的力度、更高的标准、更高的效率推进中巴经济走廊建设，将其打造成为高质量共建“一带一路”的示范性工程，为中巴全天候战略合作伙伴关系持续发展注入新的动力。今年是共建“一带一路”倡议提出10周年，也是中巴经济走廊启动建设10周年。10年前10 years ago, 习近平主席提出 President Xi 共建“一 Jinping 带一路”的 proposed 伟大倡议 the great vision 和 of 亲 the BRI 诚 and 惠 neighborhood 容 diplomacy 周边合 of 作理念。 amity, sincerity, mutual benefit, and 巴基斯坦积极响应， And all have 中巴经济走廊 response from 应运而生， and CPEC 蓬勃发展， and has since 成为 developed 共建“一带一路” an 重要 important 先行 pioneering 先 project 试项目。 of BRI cooperation. 2015年， In 习近平 2015, 主席对巴基斯坦 made 进行了历史性的 state 国事访问， to Pakistan. 中巴关系 Bilateral 提升为 relations 全天候 were elevated 战略合作伙伴 to 关系 an，all-weather strategic cooperation 确立了中巴 partnership 经济走廊 and 1+4的合作布 a 局， 1+4 cooperation 走廊建 model 设 for CPEC 步入快车道 established.，
taking CPEC to a fast lane. 中巴建设经济走廊建设 CPEC 秉承 follows the Silk 和平合作 Road、of peace 开放包容 cooperation, openness 互学 and 互鉴 mutual 互利 learning 共赢的 and mutual benefit. 丝绸之路精神，开创了共建“一带一路” A successful 构建人类命运共同体的 ARY 成功实践。 and the building of a community with a shared future. 10年来，中巴经济走廊的建设扎实推进， CPEC has made steady 成果丰硕 and productive 成为一 progress 条充满活力的 become a 开发走 corridor 廊。 of vitality and development. 在双方的共同努 With 力 our 下， joint efforts, 以走廊建设为中心， the cooperation layout 以 with 瓜达尔港 CPEC at the 交通 center 基础 and 设施 supported by Guada 能 Port 源、 infrastructure, 产业合作为 energy 重 and 点的 industry 合作布局，从蓝 has 图 turned 变 from 成现实 vision。to reality. 瓜达尔港 Guada 已经具 Port 备 is now 全 in 作业 full 能力 swing.。苏库尔 The Sukur Multan Motorway 喀拉昆 and 仑 the 公路 upgraded 改造2期 KKH Phase 2公开通， are now open for traffic. 中巴首条 The first cross-border optical fiber cable between China and Pakistan, Pakistan's first urban railway, Orange Line, 首条高压 and the first HVDC transmission line between Matiari and Lahore were put in 沙 use. 希瓦尔燃煤电 The 站 Sahiwal 提前 coal-fired 完 power 成 plant 竣工 was completed ahead of 创造 schedule 了令人称 at 赞 an 的 impressive 杭州 Punjab 速度 speed. 卡西姆港 Power plants in Port Qasim, Hub and Karalt 先后 were 建成 completed 投产， and put into 巴 operation. 沙卡伊特 The Rashakai Special Economic Zone is up and running. 科技 And cooperation on 信息技术 agriculture, 合作 science, 推进 and IT and people's well-being 走 is 廊 making steady 成为 progress. 驱动经济增长 CPEC 的 has 重 become 要 an 动力源 important 泉 driver 树 for 立了 regional 双 economic 边 growth. 战略复 It 兴 has set 共同发 an 展的典 example 范 of mutual trust and common development. 10年来 Over the 中巴经济 decade, 走廊建设 CPEC 促进发 has 展 promoted development and delivered 成为 shared 一条 benefits. 利国利民 It 的 has become 致富走廊。 a corridor of well-being and prosperity. According to 走廊累 statistics, 计为巴基斯坦带来 CPEC 254 has 亿 brought 美元的直接投资， $25.4 billion of direct investment to Pakistan, created 新增超过500公里的高速公路， thousands of jobs, and added 500 kilometers of highways, 8,000 megawatts of electricity, and nearly 900 kilometers to the national core transmission 显著改变 network. 了当地经 It 济 has 和民生的面 significantly 貌。 changed local economy 瓜 and 达尔港从 livelihood. 一个小渔村 Guada Port 发展 has 成 turned 为 from a 地 small 区 fishing 性的 village 物流枢 to 纽。 a regional logistics 巴 hub. 切尔地区的孩子们 And children 有了 in 宽敞 Fakir 明亮的新 now 学校。 have bright new 塔 schools. 尔地区的家庭妇女 Women 变 in 身为 Tar 职业的 have now 卡车司机 become professional truck 巴赫尔 drivers, 民众的交通出行 and 时间 commuting time in 大大缩 Lahore 短， has been greatly 很 reduced. 多人都摆脱了 And many people 经济 no 经常 longer 性的 have 停 to 电的 worry 困扰 about frequent power 走廊给 outages. 众多的普通百姓的生 CPEC 活 has brought 带来了 significant 明显的变 changes 化 to many ordinary 树 people 立了以民为本 and has set an example of people first and shared benefits. 10年来 Over the 巴经济 decade, 走廊建设助力合 CPEC 作 has promoted women cooperation 成为一条 and has 情深 become 意重的 a corridor 友 of 谊走廊 friendship. 中巴经济走廊合作的平台 CPEC is a cooperation 也 platform 是友谊的纽带 and is also a 把两 bond 国 of 人民的 friendship 心紧紧连在一起 that brings our two 成为中 peoples 巴友 close 谊的 together. 新标杆 It is a new benchmark for China-Pakistan friendship. 中国工程技术 Over the 人员 decade, 和巴 Chinese 方的员工 engineers and Pakistani workers have worked hand in hand and in close coordination. They have set up buildings and built roads in some of the most impossible places, 建设奇迹，演绎了一幕一幕 performing 团结 so 协 many 作、 touching 精益 scenes 求精、 of 互 collaboration, 相互助的 excellence, 感人场景。 mutual trust, and mutual 在 support. 新冠疫情期间， During 两国的 COVID, 员工携手 workers from the two 共克时艰 countries，确保了 overcome 走廊投 the 产项目 difficulties to 平 ensure 稳运 the 行， smooth operation 在 of 建项目 completed projects 有序推 and 进， steady progress of 书 ongoing 写了一 ones, 段又一段同舟 writing 共济、合作共 stories 赢的 of 佳话。 mutual support and women 走 cooperation. 廊描绘了新时期 CPEC 共建中巴命运共 opens 同 up 体 a 的 new chapter 新 of 篇章， China-Pakistan community 树 with 立 a 了 shared 守望 future 相 in a 助 new era, 睦邻友好的典范。 and set an example of mutual support 在 and 此 good neighborliness. 我要向勤劳勇敢的 Here, 巴基斯坦人 I 民 pay 致敬， tribute to the diligent 向 and 参与走 courageous 廊建设的 Pakistani 所有 people 中巴员工致敬。 and to Chinese and Pakistani 是你们的大力 workers 支持 who participate in 无 CPEC. 私付出 It is your 和辛勤 support, 的汗水， contribution, and hard 让 work 中巴经济走廊 that turns 从蓝 CPEC 图 from 变 vision 成现 to 实。 reality.
Your Excellency, Mr. Prime Minister, ladies and gentlemen, friends. Looking forward, China-Pakistan cooperation and CPEC will embrace new historical opportunities. China is following the guiding principles of the 20th CPC National Congress to apply the new development philosophy, foster a new development paradigm, and pursue high-quality development, and advancing the rejuvenation of the Chinese nation through a Chinese path to modernization. Pakistan is also exploring a path to industrialization, modernization, and sustainable development. We should continue to aim for high-standard, sustainable, and livelihood-enhancing outcomes, step up coordination and cooperation to build an upgraded version of CPEC, to break new grounds for high-quality development of CPEC, so as to promote an even closer China-Pakistan community with a shared future, bring more benefits to our two peoples, and make our own contributions to regional or even world development. To this end, I would like to propose the following suggestions. First, jointly building a growth corridor. We need to stick to the set blueprint and implement the long-term plan of CPEC. We should strive for an early start of the ML1 upgradation project, improve the overall planning for industrial park cooperation, and further promote practical cooperation on various fronts to help Pakistan achieve sustained, steady economic growth and achieve national prosperity. Second, jointly build a livelihood-enhancing corridor. We need to put the people first and deepen cooperation on industry, agriculture, health, education, training, and people's well-being, and to carry out more small and smart livelihood projects. We need to develop human resources, create more jobs, so that more dividends of CPEC can be shared among the Pakistani people. Third, jointly build an innovation corridor. We need to follow an innovation-driven approach, give full play to relevant working groups, and expand cooperation on new areas such as high-tech, mobile communications, e-commerce, AI, and smart cities, to inject more impetus to CPEC with innovation. Fourth, jointly build a green corridor. We need to uphold green development and forge greater synergy between the Green Silk Road with the Green Pakistan initiative. We need to prioritize resource saving and environment protection, step up cooperation on green investment, infrastructure, agriculture, and disaster relief, and follow a path of green and low-carbon development. Fifth, jointly build an open corridor. We need to uphold openness and inclusiveness, actively step up communication and coordination with regional countries, welcome the participation of third parties in CPEC, and promote the extension of CPEC so as to advance regional connectivity and economic integration, to share cooperation opportunities, and pursue common development and prosperity. Ladies and gentlemen, friends, the world today is marked by volatility, and the changes unseen in the century are unfolding faster. Humanity is facing unprecedented risks and challenges. Not long ago, Chinese Premier Li Qiang and Prime Minister Shehbaz had two productive conversations and meetings, reached many new and important consensus. China is now carefully implementing these consensus. China and Pakistan are good neighbors, friends, partners, and brothers. Our joint effort against challenges will play a significant role to peace, development, and stability of our two countries and the region. China firmly supports Pakistan in safeguarding its national sovereignty, independence, and territorial integrity, and in pursuing national unity, social stability, and economic prosperity. We are sure that the diligent and courageous Pakistani people will create a better future with their own hands and focus on development to hold the future of Pakistan firmly
in their own hands. The road ahead for Pakistan will be wider, and the prospects for Pakistan's development will be brighter. China and Pakistan are bonded by shared mountains and rivers and common interests. Our two peoples share a time-honored and rock-solid friendship. CPEC is an accelerator of cooperation, new engine for growth, and a planter of friendship. It is further deepening our all-weather friendship, and we have gained valuable experience from it. First, sticking to strategic guidance. President Xi Jinping and the Pakistani leader attach great importance to CPEC. They have devoted personal efforts to use every meeting and exchanges of letters to exchange views, which provides top-level design and sets the direction for CPEC. Staying committed to extensive consultation and joint contribution. On the basis of full consultation, we identify cooperation areas, priorities, and models, and bring more Chinese investment and technologies to Pakistan, and more quality Pakistani products to the Chinese market and homes of Chinese households, thus realizing complementarity and winning cooperation. Staying committed to people's well-being. CPEC belongs to the people. It covers large areas and benefits a large population. Whether it is infrastructure such as power plants, roads and ports, or it is exchanges and cooperation in industry, science and training, CPEC always follows the people-centered approach and is committed to creating a better life for the ordinary people. These precious experiences come from practice, and we should cherish them. We believe that as long as we implement the guiding principles of President Xi's message and implement the important consensus reached between Premier Li Qiang and Prime Minister Shehbaz, China-Pakistan cooperation and CPEC in the next decade will make new progress in the next decade, and China-Pakistan relations will embrace an even brighter future. May Pakistan enjoy prosperity and its people happiness. May China-Pakistan friendship be everlasting. Chin Pak Dosti Zindabad. Thank you. चीन के नायब वजीर आजम ही लीफिंग तकरीब से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि सीपेक पाकिस्तान में सड़कों के जाल बिछाए गए, पाकिस्तान में सनती तरक्की के दौर का आगाज हुआ। साथ उनका यह भी कहना था कि इंडस्ट्री, कल्चर और सेहत के शोबों में मजीद ताउन की जरूरत है, और उनका यह भी कहना था कि तवानाई, ज़राअत, रेलवे, IT समेत मुख्तलिफ मंसूबे शुरू किए। This is such a unique and unprecedented relationship which has always ignited the imagination of our people. Ladies and gentlemen, to celebrate this momentous occasion, the milestone of completing 10 years of CPEC, one of the salient activities is issuance of a commemorative postage stamp and a beautiful memento. The stamp will serve as a tangible and enduring tribute to the accomplishments made through the CPEC. Moreover, this memento will represent the enduring friendship and collaboration between the Iron brothers. Ladies and gentlemen, I am honored now to request the chief guest of today's ceremony, the Vice Premier of People's Republic of China, Excellency Lifeng, and Honorable Prime Minister, Islamic Republic of Pakistan, Mr. Mohammad Shehbaz Sharif, to kindly come up on the stage and personally reveal the commemorative stamp and coin to mark the decade of China-Pakistan Economic Corridor. A big hand for both the dignitaries, ladies and gentlemen. This is a historic moment for CPEC, 10 years down the journey, and it's just the beginning. Ladies and gentlemen, these designs that will soon be revealed not only commemorate 10 years of CPEC, but the lasting friendship between the two countries. Ladies and gentlemen, may we now request the Excellencies, the Honorable Vice Premier, and the Honorable Prime Minister
to kindly place their hands on the globe, and as they do that simultaneously, the digital reveal will What a happen. historic moment, ladies and gentlemen. The decade celebration of China-Pakistan Economic Corridor. The senior leadership of Pakistan and China present here. Excellencies, may I request you to please step forward as we now have the commemorative memento being presented. Ladies and gentlemen, this memento has been prepared in Pakistan, and it captures the essence of the successful partnership for economic cooperation between the two countries. It's a beautiful reaffirmation of our commitment to strive together to make a community of shared future. And this picture will go down in history, absolutely, Siddha. May I now request both the dignitaries to kindly move to the commemorative envelope, which is designed by the Chinese side and has been brought all the way from Beijing to Islamabad. Both the dignitaries will sign on it and endorse the China-Pakistan Economic Corridor project. This selects the 4 representative projects, that is 1+4, initial layout of the China-Pakistan Economic Corridor, and highlights the long-lived China-Pakistan friendship. Ladies and gentlemen, a historic moment for Pakistan and China. We have the senior leadership, the Prime Minister, Islamic Republic of Pakistan, Mr. Mohammad Shahbaz Sharif, accompanied by the Vice Premier of People's Republic of China, Excellency Lifeng. Ladies and gentlemen, this envelope has come from Beijing and indeed is a historic moment. With this, we would like to take this opportunity to thank His Excellency, Mr. Lifeng, the Vice Premier of China. Thank you, sir, for being present here. And I would now like to request the Honorable Prime Minister, Islamic Republic of Pakistan, Mr. Mohammad Shahbaz Sharif, to kindly address the august gathering. Ladies and gentlemen, put your hands together for the Prime Minister, Islamic Republic of Pakistan, Mr. Mohammad Shahbaz Sharif. Bismillahirrahmanirrahim. Excellency Vice Premier Lifeng, honorable members of the Chinese delegation, honorable ministers, excellencies, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and a very good evening. Excellency, thank you very much for visiting Pakistan and have time to celebrate jointly Iron Brothers from China and Pakistan, the 10th anniversary of CPEC. This great journey of friendship between Pakistan and China started immediately after China won its independence back in 1949. But this journey was accelerated through sincerity of purpose and commitment by many great Pakistani leaders, starting from late Prime Minister Zulfikar Ali Bhutto, who made very valuable contribution in terms of promoting this friendship. And then, in between, all subsequent leaders were very committed to promote this friendship. And therefore, this is a unique friendship, a unique relationship where the entire spectrum of Pakistani nation, people from all walks of life, all political parties, all institutions, they are committed to this great friendship. And then in April 2015, Your Excellency, President
Xi Jinping was very kind to visit Pakistan. Of course, that was a visit which was postponed earlier for reasons well known to us and not to be described here. Had that delay hadn't taken place, these CPEC projects would have blossomed and some of them would have been completed much earlier. In April 2015, this agreement of CPEC was signed between President Xi Jinping and Prime Minister Nawaz Sharif. And then we saw at lightning speed projects were undertaken and completed. This is still in our memory that at that point in time, power outages had crippling impact on our industry and agriculture. Our exports were damaged irreparably because foreign importers would not trust Pakistani exporters because we didn't have energy to manufacture those export orders. Our agriculture had become pale. Our industry had come to a grinding halt. And thousands of workers were out of jobs. Excellency, this was the time when CPEC came to Pakistan's rescue. And as you said, that some of the projects were completed in a record period of time. This was under the joint leadership of President Xi Jinping and Prime Minister Nawaz Sharif. I will not go into details because those have been very ably explained by you and Dr. Professor Chaudhary Ehsan Iqbal. Suffice it to say that an amount of $25 billion were invested during this period. Hundreds and thousands of job opportunities were created. And production and exports were enhanced. I think this was a game changer. And this was the result of the vision and commitment and friendship President Xi Jinping has for Pakistan and the people of Pakistan. And Vice Premier, you were a linchpin. At that time, you were the chairman of NDRC. And I know for a fact, because I had dealt with you in those days along with my colleagues, you were very helpful to support CPEC projects speedily. And my friend, Vice Minister Sun Weidong, he was our ambassador, not only ambassador of China, but ambassador of Pakistan as well. He was very supportive. He was very helpful. I can go on and go on. And this story of great friendship will not end, but the night will fall. Vice Premier, we had other segments today in this ceremony. We had to drop a few of those because of devastating incident of terrorism which took place in Bajor yesterday. And our heart goes out to the families of the departed soul. And this is, again, a very important subject of our joint cooperation. We have to jointly deal with this menace. Pakistan
has paid a huge price. Almost 80,000 Pakistanis have laid their life to fight this menace of terrorism, and we defeated it effectively years ago. And it is a great commitment and a great manifestation of our will to fight this menace till it is wiped out, not only from the face of Pakistan, but also in this region and in an extended way globally. Excellency, now we are entering the second phase of CPEC, which is even more interesting and extremely helpful in promoting investments, progress and prosperity in Pakistan and also in the region. And you have highlighted important areas of this second phase of CPEC, which is high quality development, which is growth corridor, special economic zones, livelihood corridor, innovation corridor, green corridor, and openness and connectivity. There is an effort, Your Excellency, to bypass Pakistan by some countries in this process of connectivity. And I have no doubts that Pakistan and China together will fill in the gap, and this corridor, which already has been established between North and South, will extend in many ways to include the entire region and also other parts of the world. Gwadar, you have rightly pointed out, was a few years ago was a small village. Today, it is a busy city with huge potential in times to come. Gwadar port will become very busy, and I think CPEC will ensure Gwadar one of the most busy ports in the region. And our government is placing due focus and efforts to develop this port with full speed and commitment. We have allocated sufficient resources. Electricity has now been available in Gwadar. Drinking water is available. And further developments are on the way as I speak. Excellency, Pakistan is going to turn around its economy by the grace of God through our multiple initiatives and programs. But let me, at this point in time, thank you and thank President Xi Jinping and thank Chinese government and people for supporting us at this critical juncture. Loan rollovers by Chinese banks, including Exim Bank, Bank of China, and other commercial banks, state to state safe deposits to the tune of billions of dollars in the last 4 months has been of immense help to us. And I can assure you from the core of my heart that myself, my colleagues sitting here, Foreign Minister Bilawal Bhutto Zardari, Finance Minister Hisabdar, Planning Minister Ahsan Iqbal, and all other colleagues sitting here and government officials
And the people of Pakistan in the four nook and corner in this country will remain ever so grateful to you and President Xi Jinping for supporting Pakistan financially in this very difficult time. And we shall never forget this very kind generosity and favor of yours for all time to come. But I want to say and add something here. We want to move away from these loans and borrowed monies, sums of monies. We want to move away from having handouts, aid and doles. We really want to stand on our own feet. We really want to show to the world that our people are brave people. They have great tenacity, great energy, and they are capable of facing the most difficult challenge and yet survive. The discussion and negotiation with IMF has been one of those challenges. And together with your support and our brotherly country's support, we have sailed through this storm successfully. But now is the time for us to have a reflection, introspection, and pause, and to carve out our way forward, which will make Pakistan and Pakistani look decent, respected in the eyes of our friends and foes. And the only way forward is to emulate Chinese model of growth. Even today, with these very difficult circumstances around the globe, your annual growth is still around 5.5%, which is commendable. And of course, in time to come, it's going to further improve. Your Excellency, this is where we need your support. This is where we need your expertise and learn from your experience. It is not a joke to take 800 million people out of the pit of poverty. Today, they are great contributing hands in the development of China, just in a matter of 3.5 decades. It's no less than a miracle. It has not happened anywhere else in the world. And therefore, it has happened only through visionary leadership's dynamism and hard work and untiring efforts, and a journey of sweat and blood. I would be extremely grateful that today we agree to announce joint working groups to evaluate this growth model and convert this into, under Pakistan's prevailing circumstances. And I want to assure you, this nation, 220 million people of Pakistan, all political parties, political leadership, military leadership, judiciary, doctors, engineers, on one thing, there is total unanimity that China is our true and most sincere friend. Here is the time that we should now make use of this opportunity, because time and tide wait for none. This is an opportunity we want to cash upon. I would like to request you and propose that let's constitute a joint committee to look into these matters and come up with a sound proposal, and which we can jointly implement with great speed. And I have no doubts, ladies and gentlemen, that Pakistan
soon one day will stand on its own feet. We won't have to beg and borrow. We will generate our own resources through untiring efforts as the Chinese have done. We will alleviate poverty as China did. We'll provide jobs as China did. And that will be the biggest gift we can offer to our ancestors. That will be the biggest source of satisfaction to those millions who gave their lives for Pakistan. Ladies and gentlemen, let's celebrate this great day, this great event in this spirit, and inshallah we will be marching in that direction very, very speedily. Pakistan, Chin Dosti, Zindabad. Pak-China friendship, Zindabad. Thank you very much. कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में वजीर आजम शहबाज शरीफ कर रहे थे तकरीब से खिताब, और इस वक्त आप देख सकते हैं कि वजीर खारजा बिलावल भुट्टो भी मौजूद है और उनके साथ नायब वजीर खारजा चीन लिफेंग भी मौजूद हैं। We'd like to request you, sir, to give us about 5 more minutes of your precious time. Thank you very much. Have a seat. Ladies and gentlemen, as I mentioned before, it is very gratifying for us that Chinese brothers and sisters address people of Pakistan as Bathe, which means iron brothers. China is an all-weather friend. I would like to reiterate that. During all times, all seasons, all weathers, good or bad, China has always stood with Pakistan, whether it's economic collaboration, cooperation, whether it is military collaboration. China has always been there for us. Siddha, you